So I'm going to take an hour session. I'm going to discuss with you my strategy which I follow and how do I trade options, because we are also talking about options. So we'll talk about cash market and also we'll talk about how do we trade options. So a lot of you would be knowing this, that I've been following RS strategy for some time now. How it came into my life. I started my career as a scalper. In 2006, I started with commodities. Commodity scalping was great that time. There was a price inefficiency in market because CME used to be the price driver, India used to be the price taker, and there was always a lag in the price. So scalping always works when there is a price lag, there is an inefficiency in the price. So fortunately that time not many people were there, so I was able to create a base for myself. Then currency market came. Currency market, when it was launched in FNO, NSC, there also there was a fair bit of opportunity because the spot market of currency was dominated by banks. Banks never scalp. Banks are typically position builder. So a future segment gave an opportunity for people like us to do scalping in that asset class. So with 6 to 7 years of hardcore experience in scalping, from trading from 9 o'clock to 12 o'clock in the midnight, 2013 I thought it's time for me to settle down because I had kids and they wanted a lot of time from me. So my immediate thought was, how do I develop a system for myself which should be passive trading rather than active trading. So a lot of you are asking me this question कि sir इतना टाइम मैं बिजनेस में देना चाहता हूँ, मैं इतना ही टाइम इसके अंदर में देना चाहता हूँ, how do I plan things? The answer to that question is that stock market is one place which gives opportunity to anyone and everyone who can give whatever time. तो आप दिन का आधा घंटा दे सकते हो, आपके पास कुछ है, आप कर सकते हो. अगर आप दिन के 10 घंटे दे सकते हैं, तो 10 घंटे के लिए भी आपके पास में कुछ ना कुछ है. Second thing, you actually transit, you evolve as the milestones of your life evolve. जैसे मेरी लाइफ में जब मेरे बच्चे हुए तो obviously I had to change my lifestyle. So I changed my strategy based on my lifestyle. So remember this, things are never constant in stock market. It will evolve and you should be ready to adapt the evolution which is happening inside you as well as inside the market. ठीक है, 2013-14 में I started doing research on what could be the passive strategy and I came across RS. RS is a very simple concept and now the whole world, the whole country is talking about it. Thanks to people like Ramal Parekh, thanks to people like us who have been very deeply promoting this concept. The concept is very simple कि जो strong stock है वो और strong होगा, जो weak stock है और weak होगा. सबके अलग अलग तरीके हैं. Is Hindi okay? A bit of Hindi बीच में? Yeah? Anyone with absolutely zero Hindi requirement? चलिए, वैसे मेरे को पूछना ही नहीं चाहिए था. It's so embarrassing अगर वो हाथ उतारेगा तो people will say अरे इसको हिंदी नहीं आता. So different people have different approach towards RS. Simplest approach is look at the stock price, look at the Nifty movement, and if the stock price movement is better than the Nifty movement, it is presumed that the stock is stronger. This is how I started the journey. 2013, 2014, 15, 16, 17, I was using that model, very simple model, used to work very effectively. But then every model needs improvisation. Every 3-4 years, market microstructure changes, you need to also change. So when I started the RS, as I said, it was a simple formula, price of the stock divided by price of Nifty. And if the trend of that RS indicator is positive along with the trend of the stock, there is a good enough reason to buy. But obviously the strategy doesn't stay forever. Every 3 years, 4 years, you have to tweak that strategy. But the base is still the same, RS. Strategy is getting improvised. I met Pramal Bhai in 2018 and I got to know about his strategy, the way he is looking at RS. I worked on my strategy, I did a reverse engineering. One thing is for sure, I don't copy paste. I don't copy paste other people because it's a blunder which I'll do to myself, my future growth. Yes, you can hear what other people are saying, but you have to make sure that you improvise your own strategy and build your own model. So Pramal is using RS in the form of static RS and adaptive RS. I tried to make it very simple and I said that can I see last 55 days outperformance of a stock vis-a-vis market and judge whether the stock is strong or not. Why 55? Because 55 days of almost equivalent to 3 months and
55 is a Fibonacci number, right? That model I have devised, and my team obviously has helped me doing that, and it's working fine. But that model also needs improvisation. So probably in 1 or 2 years, you'll see a better version of this model. So this is the background of RS. If you want to learn more, if you don't know about it, my YouTube channel has that video free of cost. So आराम से आप देख लीजिएगा. So I don't want to spend time today on explaining you the RS model or the model which I have. I want to spend time on showing you how you can use this RS model to trade cash market as well as to trade derivatives, and we'll take a lot of examples, right? Real life case studies. You are going to tell me a few stocks and we are going to discuss whether it worked on those stocks or not. But before that, let me just share with you my broader trading setup which I have created for myself. Yeah. So first thing first, and I'm happy to share these watch lists, everything with all of you, so don't worry. Just focus on how I have created my setup to look at the market. First thing first, I have created a watch list called macro. ये मैं आप सभी को मेल करवा दूंगा. All you need to do is, if you are using TradingView, which you should use if you are not yet using, all you need to do is all these files you have to import in TradingView. So as it is, ये watch list भी आपको मिल जाएगी. You know how to import watch list in TradingView? Yeah. In case you are doing it now, you can also help your peer here to learn how to do this, because it's a very, very good function. No. So what do I do? What do I track? I track what is happening in broader equity markets globally, Dow, Nasdaq, emerging market index, because ultimately India represents the emerging market capsule, so we need to look at that. Nifty divided by emerging market index, that how Nifty is outperforming or underperforming the emerging market index. These informations may not be relevant for your immediate trading, but at least a subconscious mind is preparing for what you should probably do, and if you're trading particularly Nifty and Bank Nifty. Then you look at the major currencies. What is dollar index doing? What is dollar index vis-a-vis USD INR doing? If obviously INR makes a particular movement, the impact will come in equity market. So we should have that information every morning, or at least 2 to 3 times in a day. You should actually go through these important asset class movements. Then in commodities, we have to track silver, we have to track gold, we have to track copper, crude, basics 5-6 commodities which are actually representing the liquidity flow in the commodities from big institutions. Then VIX is important. Finally, VIX is the one which is driving the major movement in the market. So if VIX environment is in a range, then don't expect big movements. If VIX breaks out from a range, then you should expect big movements. So for options trader, this is like the most important instrument you have to track. If not real time, but at least on an hourly basis, you should know what is happening in the VIX. Then bond market. The most important market globally is bond market. And anyone who understands bond market, trust me, financial market uske back of the hand mein hai. Itna strong instrument hai ye, because finally paise ka movement from one asset class to the other asset class will get reflected in bond market. अगर आप देखो चार्ट मैंने ऐसे बना रखा है, ऊपर में वो एसेट आता है और नीचे डॉलर इंडेक्स आता है, बिकॉज फाइनली फॉर मी डॉलर इज सुप्रीम, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई सी देयर इज अ डिस्कनेक्शन बिटवीन डॉलर एंड अदर एसेट क्लास, you don't make money. The clarity of dollar and impact of dollar on other asset class are only the times when you should go all in into the market. नहीं तो मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए. जैसे अभी क्या हो रहा है, अगर मैं निफ्टी इमर्जिंग मार्केट्स और डॉलर के बीच में कंपैरिजन देखूं, सो डॉलर इंडेक्स इज गोइंग डाउन, इमर्जिंग मार्केट इज कंसोलिडेटिंग एंड जस्ट गोइंग डाउन. दिस इज ओके. ऐसा ही होना चाहिए थ्योरेटिकली एज वेल एज एम्पेरिकली. लास्ट 100 इयर्स का हिस्ट्री देखोगे तो ऐसा ही है. और जिस दिन अगर नहीं होगा कि डॉलर इंडेक्स भी नीचे जा रहा है और इमर्जिंग मार्केट भी नीचे जा रहा है, पैसा बन ही नहीं सकता. तो वो दिन चुपचाप हाथ पीछे करके बैठे रहो, ट्रेड नहीं करना है. रिमेंबर, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लर्न व्हेन नॉट टू ट्रेड. वो कल उन्होंने कहा था ना, नो इज नो, राइट. तो वो कैसे करना है, वही
I mean, that is a habit which you have to inculcate inside you. और अगर आपसे नहीं होता है तो maybe you can ask your better half to stop you whenever she or he feels कि आप कुछ गलत कर रहे हैं. डॉलर इंडेक्स का मतलब जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे यू बी एबल टू जज कि व्हाट इज द रियल एक्शन ऑफ डॉलर इंडेक्स. डोंट एक्सपेक्ट कि एवरी डे डॉलर इंडेक्स में कुछ हो रहा है तो मार्केट में कुछ होगा. फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी ऑन अ वीकली बेसिस और 3-4 days basis, the relationship between dollar index and other asset class is always there. Okay, is this clear? Is this watch list clear? Everyone, is this watch list clear? I'm going to share this watch list with everyone. So, and I want you guys to track this. This you have to make, and it's a very easy thing to do. You just have to insert one of the assets नीचे वाले panel में, and you can make it. You want me to show you how you can make this? You want me to show you? Yes. Okay, so let's add here an indicator this. So let's add something else. Say you want to add SDFC Bank here. Okay, SDFC Bank मैंने ऐड किया. राइट क्लिक करो और उसको हम मूव टू न्यू पैनल बिलो. Yep, got it? Shall we move forward? Yeah. The other thing which I do is, this is very important chart for me because इससे मुझे मार्केट का एक ओवरऑल ट्रेंड, जो 4 मेजर इंडाइसेस है मार्केट के, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप. And relative strength is basically to figure out whether these indices have gone into oversold or overbought zone. And trender is basically my confirmation. Although looking at the chart also you can see the trend, but trender is more of a mental comfort कि हाँ chart भी यही बोल रहा है कि trend नीचे है. So what is happening right now? All 4 major indices have shown a buying, right? And if you look at this, most of the time जब ये 20 के आसपास RSI में आ जाते हैं, most of the time there is a possibility that the indices, major indices can reverse from there. Reverse हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बाइंग आएगी, but at least जो short position है, तो short position को हम relax कर सकते हैं. How do you create this? You have to take trading view का slightly one higher version, and in that version you will be allowed to do a 4 chart working. Okay. The third thing which I look at very closely is the market breadth. And this is like routine. Every day ये चीजें देखनी ही है because more or less इसी से ही market का एक 10,000 view मिल जाता है. Not that मैं इससे trade करता हूँ, but at least mentally you know exactly where the market is and what I should do. So market breadth is a brilliant data which tries to give us कि overall market के अंदर में क्या market oversold zone में चला गया है, overbought zone में चला गया है. So this is the Nifty 50, and how many stocks are there which are trading above 20-day moving average, 50-day, 100-day and 200. Typically when this reduces significantly, जब ये बहुत लाल होगा ना, इसका मतलब मार्केट ग्रॉसली ओवरसोल्ड हो गया है. तो या तो मार्केट को वहां पे थोड़ा दिन वेट करना होगा, विच इज टाइम बेस्ड करेक्शन, सो दैट दीज नंबर्स इंप्रूव्स, जैसे अभी हुआ है. ऑल्दो मार्केट वाज ओवरसोल्ड एट 17,154, 17,000, मार्केट वेटेड हियर फॉर सम टाइम. और मैंने ट्वीट भी किया था कि मार्केट हैज टू डू सम टाइम बेस्ड करेक्शन बिफोर इट रिज्यूम्स द फॉल और द राइज. तो ये बेटर हुआ है, लेकिन मार्केट वहीं पर ही है. इसका मतलब मार्केट में टाइम बेस्ड करेक्शन हो गया. This is important for people who are running shorts or longs in Nifty and Bank Nifty based on your other indicators. Is this clear? Why am I getting very flat reactions? Is this clear? Yes. Good. अब चलते हैं हम लोग RS मॉडल की तरफ. Okay. What is RS model? This is the RS model setup which I have. Okay. This is my daily RS model setup and this is my weekly RS model setup. What is the difference? What is the difference? Anyone who practices my model? What is the difference? Yeah. Can you please give me mic? Nikita? Nikita, can you please give me mic? Why 2 different templates? What is the objective? एक one day and 2 hours.
This is 1 day and this is 2 hours, correct? But I have two different templates. This is 1 day, this is 2 hour, and this is weekly and this is daily. Why? Why two different templates? 2 hours में very difficult to navigate the stock. So you see the 2 hours chart. When the 2 hours chart, the super trend becomes green, we can enter into the stock. Okay, no, but you are still not answering my question. Why two different setups? You want to answer? You want to answer? Basically, sir, weekly वाले chart में we get a broader view for a positions for 6 months to 1 year. Yeah. And this 1 day is good for swing for positional trading for a week or 15 days. So I will elaborate this part. तो डिपेंड करता है आपको किस अवधि के लिए पोजीशन लेनी है. If you want to take position from 2 days to 20 days, then I will look at the daily chart for my confirmation of the trend of the stock, and I will use 2 hourly to transact. Okay? इसमें कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी क्या इन्वेस्टमेंट थीम पे है, वो मैटर नहीं करता, बिकॉज यू एक्चुअली डोंट नो वेदर दिस कंपनी इज इनटू अ बिजनेस और नॉट. आई डोंट नो एनसीसी करती क्या है, प्रॉब्लम मुझे फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, राइट? दिस इज दी थ्योरी वन. द सेकंड थ्योरी इज बेस्ड ऑन योर वीकली, वेयर यू नो एग्जैक्टली व्हाई this stock should be invested. There is an investment theme and you have a more comfort with that investment theme. Alright everyone, clear? तो इसको मैं कैसे वर्क करता हूँ इस पे, जैसे स्टॉक है अभी एनसीसी. मॉडल बहुत सिंपल है, not very complicated, and if you have not seen my videos you can see it later and understand this. This is RS 55 as I am practicing 55 right now. This is RS 21 for my confirmation of exit. Okay, this is RSI. On a daily basis, RSI is more for my mental comfort. Not that I am going to trade based on RSI. Yes, but on a weekly chart, RSI is very important. Okay, which I'll discuss with you. Look at this stock. What do you feel about this stock? It has been a strong stock for a long period of time. Okay, and look at this. एकदम यहाँ आके reversal करता है. That's how this model is working right now. I know that probably in a couple of years this model will not work as smooth as it is right now. But what do I trade? How do I trade? Whenever stock is showing strength and it is crossing the previous swing high, so in this case it has started showing strength here and it has crossed the previous swing high, you enter the stock. Okay? With how much quantity? इसमें position sizing भी बहुत important है. So suppose we have a say 1 crore portfolio you want to use for momentum. अच्छा, इससे भी एक छोटी सी बात करते हैं कि how much money should go to momentum and how much money should go to investment. So if you have overall say 1 crore to invest in market and if your age is 40, you should invest 40% of that 1 crore for very long term. So technically that 40% doesn't belong to you. It belongs to your next generation, which is your kids. So you are a fund manager who is managing money of your kids. The moment you start thinking in this direction, your approach changes. Because तो मेरा पैसा ही नहीं है, मेरे बच्चों का पैसा है जो मैं मैनेज कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे राइट दिया है कि तुम मैनेज कर सकते हो. तो that 40% is for very long term SIP investment horizon. You don't actually look at the prices often. You don't look at the RS model often for those stocks. But the rest 60%. Why 60? Because your age is 40. 40 should be. So the moment you become 60-year-old, automatically your momentum will go down and your value investing piece will go up. Okay. The rest 60 you can use for momentum, which is if you have 1 crore, 60 lakh you can use for momentum. अब ये 60 लाख में से मुझे stock allocation करने. So say if I assume that I'm okay to invest in 20 stocks. तो 60 lakh divided by 20 is 3 lakhs. तो मुझे पर स्टॉक पे 3 लाख डालने. अगर मैं यूनिफॉर्म सब स्टॉक्स में 3 लाख डालूंगा तो मेरा बड़ा पैसा कभी नहीं बनेगा. बड़ा पैसा तभी बनेगा when I will be able to allocate 15-20% of my portfolio in one stock. But do you do that in one go? The answer is no. How do you do this? You build your position. और जैसे जैसे आप पोजीशन बिल्ड करते हैं, ऊपर लेवल तक जाते जाते उस स्टॉक में आपके पास इतना शेयर हो जाता है
कि आप उस स्टॉक में एक आउटलायर रिटर्न जनरेट करते हैं. इज इट क्लियर एवरीवन? So when you start, how much capital should you allocate? Start with a small capital. Say I start with only 3 lakh right now. मैंने 3 लाख इसमें डाला क्योंकि मैंने बाकी स्टॉक्स में भी थोड़ा थोड़ा डाला है. एंड नॉट दैट आप 20 स्टॉक में एक बार में पूरा डाल देंगे. राइट? यू स्टार्ट विथ 3 lakh in that stock. You see whether the stock is outperforming. Now, how do you see that whether stock is outperforming? TradingView has given us amazing way to label these stocks. जैसे I have labeled these stocks as blue stocks, okay? So for me, it's easier to track my stocks, and what I need to do is just go and check what is happening with these stocks. जैसे एग्जांपल देता हूँ इंडिया मार्ट. ये मैंने StockEdge में काफी बार लोगों को बताया. इंडिया मार्ट, लुक एट द चार्ट स्ट्रक्चर, लुकिंग ऑसम. इसमें मैं अपना पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ. कब से कर रहा हूँ? ये एक्चुअली मैं वीकली चार्ट पे कर रहा हूँ बिकॉज मैं फंडामेंटली भी इस स्टॉक में कन्विंस हूँ. And obviously, once you are fundamentally convinced, you want to build much bigger position than your swing position. My portfolio is far more than 1 crore, so I am not worried about the capital allocation. But yes, you will have to clearly define that capital allocation plan for yourself. So let's go to India Mart here and look at this chart. Weekly basis पे, this is weekly RS. 21 पीरियड RS. वीकली में मैं 55 नहीं ले रहा हूँ बिकॉज बहुत टाइम लग जाएगा 55 को ग्रीन दिखाने में. तो वीकली आई एम लुकिंग एट 21 पीरियड. लुक एट दिस चार्ट. कैन यू गेट अ बेटर चार्ट देन दिस? वीकली में शोइंग स्ट्रेंथ. ओके, आई एम कन्विंस. डेली के अंदर में लुक एट द पैटर्न, लुक एट द ट्रेंड. मार्केट कहीं भी जाए इसको मतलब नहीं है, ये अपना चाल चल रहा है. ओके, बाय द वे वीकली चार्ट पे जो आप ट्रेड लेते हैं, यू डोंट रियली लुक एट निफ्टी, बट डेली चार्ट पे जब आप ट्रेड ले रहे हैं डेली और 2 आवली में, देन निफ्टी डज मैटर. ओके, तो यू ऑब्वियसली वांट टू गो एज मच जीरो इफ मार्केट इज नॉट इन द राइट ट्रेंड. एंड उसमें भी मैंने रूल डाल दिया कि मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अपने को सिर्फ एग्जिट मोड पे रहना है, एंट्री करना ही नहीं. सो देयर आर स्टॉक्स व्हिच आई एम होल्डिंग बट दे आर ऑन एग्जिट मोड. क्योंकि उनका RS अभी भी नेगेटिव नहीं है तो मुझे कोई टेंशन नहीं. RS नेगेटिव हो जाएगा उस दिन मैं डंप कर दूंगा. अभी मैं कुछ ले नहीं रहा हूं. 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तब ले लेंगे. आई एम ओके टू बाय 5% 10% महंगा, बट आई वांट टू राइड दैट 30-40% मूव फ्रॉम देयर ऑन. इज दिस क्लियर कॉन्सेप्ट एवरीवन? या एनी क्वेश्चन? वीकली, डेली, RS मॉडल, how to enter, how to exit, any question? You have question? Basically, you exit the stock when RS go down. So in this pattern, you exit go down weekly or daily? Yeah. So because this is fundamental driven, I'm convinced with the investment theme in this stock, my exit will be obviously on a daily basis. And anyways, जब आप टेम्पलेट देख रहे हो, इधर वाला साइड मुझे बता रहा है क्या करना है, बट इधर वाला साइड से मैं कर रहा हूं. ठीक है? लॉन्गर टाइम फ्रेम एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम. थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. फॉर मी RSI इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लार्जर टाइम फ्रेम. RSI एज अ टूल इज सो पावरफुल. इफ यू इंक्रीज द ड्यूरेशन, इट इफेक्टिवनेस गोज अप. अगर स्टॉक में वीकली RSI 50 के ऊपर है और डेली भी 50 के ऊपर है, मतलब ये स्टॉक सही है. देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी द स्टॉक विल बी तेज. And we can still go wrong. After all, my success is also only 60%. But then if my loss is this much, if I'm trying to make this much profit, eventually I beat the market. Any other question, sir? ये रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लोज निफ्टी 55 और 21 जो नीचे इंडिकेटर्स है वो कहाँ से? ये मतलब I have explained this in my YouTube video also. तो आप सेशन नंबर 31 देखोगे तो एकदम बेबी स्टेप में मैंने समझा रखा है. तो एक बार वो स्किप करते हैं बिकॉज वी हैव लॉट मोर थिंग्स टू डिस्कस. ओके, थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन? अरे वाह, नो मोर क्वेश्चन. ओके, वन क्वेश्चन. RS और RSI में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा RS और RSI में डिफरेंस क्या है? RS और RSI डिफरेंस क्या है? अच्छा चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बिकॉज दिस आई थिंक सम पीपल आर नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन. RSI, अच्छा RS और RSI, तो सब आप इमेजिन कीजिए कि गाड़ियों की रेस लगी है. ठीक है? और ये यहाँ पर पहली वाली गाड़ी है और यहाँ दूसरी वाली गाड़ी है. तो ये दोनों गाड़ी के बीच जो डिफरेंस है वो RS है.
मतलब रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ गाड़ी नंबर 1 vis-a-vis गाड़ी नंबर 2। तो जब तक वो RS 0 के ऊपर होगा तब तक चांस है कि ये गाड़ी जीत जाएगी। और RSI है उस गाड़ी, पहली वाली गाड़ी का स्पीडोमीटर, कि क्या उस गाड़ी में मोमेंटम है कि वो दूसरों को बीट कर पाएगी। तो दोनों अपने आप में अलग अलग बात कर रहे हैं। ये उसके साथ कंपेयर कर रहा है और ये खुद का लास्ट 14 दिन का मूवमेंट के हिसाब से अपने आप का मोमेंटम बता रहा है। गॉट इट? देखिए, एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जो आलू की सब्जी होती है, मैंने पिछले फेस्टिवल में बोला था, आप देखोगे ग्रेवी मोरलेस सेम होती है, चाहे वो आलू की सब्जी बना लो, कांदा की बना लो, कुछ भी बना लो, बट जो कोर कंपोनेंट है वो आलू। सो आई ऑलवेज टेल दिस टू पीपल दैट यू फाइंड आउट योर आलू। ग्रेवी तो मोरलेस कॉमन ही है, किसी भी होटल में जाओगे तो वो चिकन बनाएगा तो वही ग्रेवी डालेगा, आलू में भी वही ग्रेवी डालेगा। व्हाट इज योर आलू? आई हैव, फॉर मी RS इज माई आलू and RSI is supporting me. For you it could be RSI is my आलू. My initial decision making will happen only from RSI and RS can become a supporting. It's totally up to you. Yeah. How is RSI calculated? RSI? अरे RSI तो बहुत ही मतलब दुनिया जानती है RSI। पिछले 14 दिन का प्राइस एक्शन, बस चेंज इन प्राइस, उससे देयर द फॉर्मूला, उसको छोड़ देते हैं। ये बहुत ही कॉमन है, गूगल करोगे भरे हुए हैं कंटेंट्स में। I have a question. Yeah. I just would like to know what exactly, like you explained the summit of the model, like the entry point and the exit. Like we have 3 indicators. Yeah. One is your RSI, Yeah. one is 55 and one is 21. Yeah. So how do we enter? What is the... Okay, let us do that. Let us do that together. So this is a stock India mark, this is a weekly chart and this is a daily chart, okay? Weekly chart I am looking at to build an opinion. Is this stock worth looking at? What do you think? Is it worth looking at? What is the objective of worth looking at? Is RS 21? In weekly I am using 21. In daily I am using 55. Okay. What is the logic of 21, 55? Did you get it? Both Fibonacci number. 21 is lower duration. It will give me better and faster information. Because it is weekly, I want faster. I don't want to wait for 55 weeks to tell me that this is happening in this stock. So this is positive. RSI is greater than 15. Stock price action is clearly suggesting that it has broken the previous swing high. So yes, I am interested in this stock. That doesn't mean that I just buy. When will I buy? When this chart is also suggesting me that buy. RSI greater than 50, which is good. RS greater than 0, which is nice. Has the stock broken previous swing high? Yes. Will I enter? When will I enter? That is the question, no? When will I enter? Sorry, line chart. When will I enter? This is the previous swing high. So your ideal price to enter is here. This is the best risk reward zone for you. बिकॉज इसका जो कैंडल है यहां पे जो बनेगा, दिस कैंडल इज द मोस्ट पावरफुल कैंडल बिकॉज दिस कैंडल इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। कैन यू सी द वॉल्यूम देयर? तो आइडियली यू शुड एंटर हियर विद द क्वांटिटी, विद एन इंटेंट दैट यू विल ऐड मोर क्वांटिटी एज द स्टॉक गोज अप। ओके, तो छोटा क्वांटिटी, चाहे 3 लाख है, 4 लाख है, व्हाटएवर इज गेम प्लान। व्हाट इज द स्टॉप लॉस? Now there are 2-3 ways to put a stop loss. When you start market, when you are young in market, then rely on price based stop loss. But as you gain maturity, as you know how to handle big losses, you get into indicator based stop loss. I follow indicator based stop loss, which is very risky because then you can lose 15-20% in a stock also. But indicator based stop loss has helped me to get 2x, 3x return also in stock. I'm okay to take that risk, right? But ideally, someone who comes new into the market should not look at indicator based stop loss. तो ideal stop loss क्या होना चाहिए? जिस कैंडल में आप एंटर किए हो, जिस कैंडल में आप एंटर किए हो, उसका एक कैंडल पहले का लो कैन बी अ स्टॉप लॉस. वेरी सिंपल. एंड व्हाट शुड बी योर टेक प्रॉफिट? द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस, एंटर प्राइस एंड द स्टॉप लॉस, उसका एटलीस्ट 2 टाइम्स. 2 टाइम्स तो लेना ही पड़ेगा ना मिनिमम. अगर वो 2 टाइम्स आ गया तो आधा बुक कर लो, और आधा को इफ यू आर बोल्ड इनफ यू कैन कीप ऑन ट्रेलिंग based on indicator or based on new candle
which the stock is making. Typically अच्छे stocks जो up trending होते हैं, they all keep on making higher highs and higher lows. Typically, so you can keep on trailing your stop loss based on next low of the next candle. Is it okay? Yeah. बाकी मैंने डिटेल में ना वीडियो में YouTube में समझाया हुआ था. I think you can look at this. चलिए, now I want to go to options trading. How do I do options trading using this? How do we get RS close 21,561, which indicator is it like? Are you using some other author or? I mean, I'm trying, but I can't get the setting the way. In trading view, you're not able to locate this. Yes. Okay. I can do RS, but not how you're able to know. Nifty 21,561. Okay, no problem. So let's do it together. Just go to trading view, type relative strength of a stock. Can you locate this? And we have a indicator by our friend Bharat Trader, who incidentally, he's a great guy, he's an RS warrior also. So select that, you enter here. Once you do setting here, दिख रहा है यहाँ पर setting. Every indicator in trading view you can change the setting. You go to the setting and here you can change the period. Is this clear? Are you using trading view directly or through a broker platform? Directly, yeah. So this is there. Through a broker platform, I don't know whether they allow public indicators in the broker platform library. Okay, I want to move forward and I want to talk about options trading using the same model, how to trade options and do some passive trading and make money. Vivek, quick question. Where is this? So, relative strength, why is it always with Nifty? So, Yeah. if we stop in small cap, Yeah. mid cap, why is it then looking Nifty? Yeah, that's a very good question. So, because small cap index is not traded, it is not an efficient index. So the best possible option right now is Nifty. Second, don't trade small cap stocks or mid cap stocks based on Nifty. I mean, this relative strength model works best with NSE 500 stocks because those are good enough universe where there is enough liquidity, and benchmarking of the performance also is to a certain extent with respect to Nifty because Nifty is the most traded. But those are what I hope mid cap index develops in India. और शायद कौन सा दिन अवेलेबल होगा? मंडे है क्या अवेलेबल? एक्सचेंज वाला मंडे को कुछ तो नहीं देगा, नहीं तो संडे डाल देगा वो लोग बस सारा तो मंडे को हो सकता है मिड कैप इंडेक्स आ जाएगा, तब हम लोग मॉडल को इम्प्रोवाइज करेंगे, मिड कैप स्टॉक्स को हम मिड कैप इंडेक्स के साथ देखेंगे. जैसे ये मॉडल डाउ जोन्स में नहीं चलेगा क्योंकि वहां पर इंडाइसेस में ETF ट्रेड होते हैं विच आर वेरी एक्टिव. इंडिया में ETF मार्केट भी उतना एक्टिव नहीं है, इसलिए हमको रिलायबल निफ्टी पे करना पड़ेगा. बैंकिंग स्टॉक यू कैन स्टिल ट्राई विद बैंक निफ्टी, बट अगेन आई एम सजेस्टिंग आप निफ्टी को रखिए और बैंक निफ्टी भी रख सकते हैं, बट रिलाई मोर ऑन निफ्टी बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव सीन दैट निफ्टी इज अ वेरी एफिशिएंट इंडाइसेस फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ. चलिए, मैंने मॉडल, ये पीवीडी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, तो मैंने मॉडल यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है एज अ क्विक रिकैप. सो एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम बाद में फील फ्री टू रीविजिट दिस प्रेजेंटेशन. ओके, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग हम कैसे करते हैं? नाउ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ डूइंग ऑप्शंस ट्रेडिंग इज टू स्टडी द ऑप्शन चेन, राइट. और जहाँ पर OI सबसे ज़्यादा है, मतलब वहाँ कुछ ना कुछ तो है. एक बार इस पॉइंट ऑफ व्यू को नेगेट कर देते हैं कि वहाँ सिर्फ सेलर है, बिकॉज स्टॉक के केस में ज़रूरी नहीं है सेलर है. अगर हाई OI है तो हो सकता है बायर भी होगा. निफ्टी बैंक निफ्टी में वेरी लाइकली सेलर है, बट स्टॉक में कोई भी हो सकता है. तो लेट्स मेक एन अजम्पशन दैट जहाँ हाई OI है जिस स्ट्राइक प्राइस में, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है. कैन वी डू दैट? ओके, व्हाट डू आई डू ऑन डेली बेसिस? I have a watch list of F&O stocks here, and I'm going to share all these watch lists with you. I'm repeating so that you guys can also import this and use it. So it has taken us some time to develop this watch list, and this is sector-wise F&O watch list. Every day, these stocks, जितने भी stock है, इनको तो देखना ही देखना है. Every day, and it doesn't take too much time. Max 40 minutes. हर stock का chart, एक बार आपका template बना हुआ है ना, how long it takes? और ये मैं डेली में देखूंगा. दिस इज नॉट अ वीकली थिंग बिकॉज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर में यू ट्रेड फॉर अ शॉर्टर स्विंग, यू डोंट कैरी पोजीशन फॉर अ लॉन्ग. तो व्हाट डू आई डू? ऑल आई नीड टू डू इज
quickly I need to just skim through this exercise every day. Can you do that? Is it a big ask? Is it a big task? Easy है. कौन कौन लोग करते हैं every day you study 200 charts? Can you please stand up? Can you please stand up? People who study 200 charts on a daily basis, can you please stand up? And can we give a round of applause to all these people who are standing? Excellent. That's why they say only 1% people make money in market, big money. And in every such events, I do see that there are only 1% people who are outliers. 99% people are still figuring out what to do. अगर आप डेली बेसिस पे निफ्टी के छोड़ दीजिए, निफ्टी 500 छोड़ दो, निफ्टी 200 छोड़ दो, एटलीस्ट एफएनओ स्टॉक्स जो इनका चार्ट देखोगे तो दीज चार्ट्स ऑल्सो ट्राई टू गिव यू लॉट ऑफ हिंट्स कि अभी ये सेक्टर चल रहा है, इस तरह के स्टॉक्स में भी स्ट्रेंथ दिख रहा है, वीकनेस दिख रहा है. तो आई विल हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गेट इनटू दिस हैबिट ऑफ लुकिंग एट चार्ट्स. जैसे हम लोग टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, खाली चार्ट ऐसे देख लेने से एक अच्छा फील होता है. I can't give a scientific reason of that feel, it's just a feel which we get. So जब हम options trading करने की बात कर रहे हैं stocks के अंदर में, so obviously you are interested in either debit spread or credit spread. Most of the money is made, as per my experience, I may be wrong or some other people may be more skillful, most of the money is made when I am doing credit spread. मतलब जब मैं प्रीमियम घर में लेके आ रहा हूँ तब हाई चांस है पैसा बनने का. ऐसा क्यों? Anyone who can give me the answer of this question? Yeah. The probability of profit is more if you open. वो तो खैर ऑप्शन सेलिंग वर्सेस ऑप्शन बाइंग का वो है कि ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ, बट स्टॉक के अंदर में क्रेडिट स्प्रेड में मैं ज्यादा पैसा क्यों बनाता हूँ? is with us. हाँ, Time value. Time is with टाइम us. वैल्यू तो निफ्टी में भी है. That's the reason. वो तो ऑप्शन, so we are answering option selling versus option buying का difference. Yes. What I'm saying कि stocks के अंदर में क्रेडिट स्प्रेड में क्यों ज्यादा पैसा बनने का पॉसिबिलिटी है? हाँ, वॉल्स ज्यादा होता है. That is the answer. The volatility is typically high. The premium value is higher. हाँ sir. Hello. Sir, I think there are two reasons. One is the movement in indices is very limited. Whereas in stock, it can be 5, 10, 15, 20% at a time on a day. Secondly, the probability of profit when we enter a credit or a debit spread is there in most of the platforms like Opstra, whatever platforms we use. So if you just use that as a reference, I'm sure the probability of average trader can go from 0.1 to 1 to 5 to 10 to 25. Yeah, that's also a fair point. So thank you so much for giving that input. So let's conclude that हम लोग credit spread try करेंगे, okay? Because debit के अंदर में कम chance है पैसा बनाने का, credit में ज़्यादा chance है पैसा बनाने का. So how does it work? As I said, option chain will give us a level जहाँ पे बहुत सारे buyer slash sellers हैं on either side, call side or the put side. You have various platforms where you can check the open interest levels. Identifying the demand zone. So typically those option strike price will be a demand zone typically. And also look at the chart. Chart के अंदर में भी जो swing lows हैं, अगर वो 2 बार रेस्पेक्ट किए गए हैं तो चांसेस है कि वो डिमांड जोन है. और स्विंग हाई अगर 2 बार रेस्पेक्टेड है चांसेस. वेरी सिंपल, देयर इज नो रॉकेट साइंस वी आर डिस्कसिंग हियर. सो लेट्स लुक एट द स्टॉक लाइक दिस. सो सिंपल, आई मीन स्विंग लो को 2 बार रेस्पेक्ट, 3 बार रेस्पेक्ट किया मतलब ये डिमांड जोन है, करेक्ट. एंड स्विंग हाई को रेस्पेक्ट किया तो सप्लाई जोन है. 1 इज वीकर, 2 इज स्ट्रॉन्गर, 3 इज सुपर स्ट्रॉन्गर. तो जितना ज्यादा प्राइस लेवल्स पे कंफर्मेशन होगा उतना ज्यादा चांसेस है कि उस प्राइस को डिफेंड किया जाएगा. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रेडिट स्प्रेड. तो व्हाट डू वी नीड टू डू? व्हाट इज क्रेडिट स्प्रेड? व्हेन वी आर प्लेइंग तेजी इन मार्केट और मुझे क्रेडिट स्प्रेड से तेजी खेलना है, तो एनीवन वुड लाइक टू वॉलंटियर? मैं क्या करूंगा? एनीवन? पुट स्प्रेड. अरे आपको तो पता ही है. एनीवन वुड लाइक टू वॉलंटियर? ये बताओ, टीचर बता रहा है इनसे. एनीवन वॉलंटियर? मुझे क्रेडिट स्प्रेड से तेजी खेलना है, मैं क्या करूंगा? आप ही करेंगे? चले आप बताइए. आइए आइए, कोई नहीं. एट लीस्ट यू आर प्रोएक्टिव. Should I explain it? प्लीज.
So what we do is we generally sell E or a C which is closer to the current price so that we get more premium, and then we buy something which is out of the money. Because, for example, like in this example, you're buying your first. Obviously in our markets, you need to buy first and then you need to sell, because that's how you get proper premium leverage. So you have to buy far OTM first in the direction that you feel it's going to go. Obviously, it's down, it's B or C, and then you have to sell near. So generally, if it is far, if you're buying something which is far, it will be lower priced, maybe 20,000 rupees. And if you're selling something which is near, it will be like 50,000 rupees. So there will be net trade of 30K, or in rupees it will be like 10, 15, 55, 100, depending upon the stock or the indices that are picking. Correct, perfect. So credit spread is when you are selling higher premium and you are buying out of the money lower premium. Why do you do that? Why do you buy? Because you want to reduce the margin requirement. And जब से ये margin वाला benefit मिलने चालू हो गया, this kind of a business has become amazing. Okay? जहाँ पर खाली sell और buying में नहीं मिलती थी margin benefit, आपका premium invest होता था. So we pushed exchange very hard that there is no loss for you if I'm doing spread trading. Why are you charging so much margin? Even SPAN doesn't allow you to charge so much margin. But exchange used to enjoy that money, because ultimately the money goes to the clearing house and they earn interest out of that. That's the business model they have. So credit spread, sell in the money or nearest to the in the money, and buy out of the money option. तो put credit bullish, मैं put में खेल रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, put option का in the money के आसपास मैं बेचूंगा और out of the money put option में खरीदूंगा. Okay? I have mentioned few examples also. Preferably जो strike price आप बेचेंगे वो डिमांड जोन के आसपास होनी चाहिए. तो आप एट द मनी नहीं बेचेंगे, कोई ना कोई डिमांड जोन होगा ना जहां से चांसेस है कि स्टॉक डिफेंड हो जाएगा, उसका पुट ऑप्शन बेचेंगे और नीचे का पुट ऑप्शन को खरीदेंगे. आर यू गाइस विद मी? यस और नो? या वेरी सिंपल. कुछ पॉइंटर्स है इसमें याद रखने के कि हम जो बाइंग करेंगे प्रीमियम बेच के, जो बाइंग करना है, कोशिश करना है कि हमारा नेट प्रीमियम इनफ्लो तकरीबन 5,000 रुपए का होना चाहिए पर लॉट. बिकॉज मोर और लेस योर मार्जिन रिक्वायरमेंट इन सच काइंड ऑफ अ रेशियो ट्रेड इज अप्रॉक्सीमेटली 35,000 to 50,000 डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक. तो अगर हम 10% का नेट प्रीमियम इनफ्लो वीजा विज द मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर टारगेट कर रहे हैं और हम बना ले वो पैसा, इट्स अ ग्रेट रिटर्न, इजंट इट? या सो 10% और 5,000 नियर बाय, तो कभी 40,000 का अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट है तो अगर 4,000 भी आपको मिलता है तो सिलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस टू बाय द प्रीमियम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द 5,000 or 10% of the margin requirement. When will you book the profit? Now there are two theories in this. One is गलने दो, पूरा पैसा मिल जाएगा. The other theory is that the last leg of premium decay is obviously much slower. Last leg in stocks. तो बेटर है कि आपने 5,000 रुपया जो प्रीमियम डाला आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आएगा आपके पास में, अगर उसका 70% आ गया, मतलब 3,500 रुपये अगर आ गए, that means you are targeting 7% return only, you are sorted. Is this clear? You square up your trade. No point in carrying the trade for the last 30%. These are all things which we have been doing and we have seen success. So that's why we thought that this is a very systematic, rule-driven approach I have to follow. There is no discretionary here. जब ये आ गया चुपचाप उसमें से निकल जाने का है. So एक एग्जाम्पल लेते हैं. So ये JSW Steel and we can take live examples also. तो JSW Steel का ये डेली चार्ट है और ये 2 hourly चार्ट है. When will the trade get initiated? This chart is clearly suggesting me कि JSW Steel weak है. तो जो शॉर्ट करना पसंद करते हैं या जिनको मंदी भी खेलना है उनके लिए ये सब स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है. JSW Steel weak है,
हम यहाँ पर उसको वीक खेल सकते हैं, ये हमने कंक्लूड कर लिया। लेकिन खेलना कैसे? यहाँ से खेलना है, ठीक है। सिंपल है कि आप फ्यूचर्स बेचते हैं, तो जो बहुत ही जिगर वाले होते हैं वो यहाँ पर फ्यूचर्स को बेच देंगे। स्टॉप लॉस कौन सा होगा? इसके हाई, विच इज अ बिग स्टॉप लॉस, बट फ्यूचर्स शॉर्ट के अंदर में पैसा बनता भी बहुत जल्दी है, तो इट्स ओके इवन इफ यू हैव टू पुट दैट स्टॉप लॉस। यू सी ये स्टॉप लॉस आराम से आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। ऑप्शंस ट्रेडर क्या करेगा? ये जो ऊपर का जोन है, कौन सा जोन है ऊपर का? दिख रहा है यहाँ पे, लुक एट दिस जोन। ये जो जोन है which is, I mentioned the price also here. So this supply zone is around 400 and the option chain also has 400 पे बहुत ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब किसी को पता है कि ये प्राइस मेरे को डिफेंड करना है। अगर आपको पता लग गया कि किसी को पता है तो आप भी क्यों नहीं इसमें से छोटा पैसा निकाल लें। ओके, वन मोर जस्ट फिलोसॉफिकल थॉट। You will only make money when the operator wants you to make money. An operator wants you to make money. Remember this. Operator is not in the market to take money from you. Because operator का काम क्या होता है? वो बड़ा पोजीशन बिल्ड करता है, बड़ा पोजीशन से एग्जिट करता है, और जब तक वो छोटे छोटे लोगों को पैसा नहीं बांटेगा उसका पोजीशन बिल्डअप नहीं होता है। तो डू नॉट ऑलवेज थिंक कि ऑपरेटर इज हियर टू टेक मनी फ्रॉम यू। ओके, तो अगर बड़ा पोजीशन ऑपरेटर ने वहां बिल्ड किया है तो आप उसके साथ में खड़े रहेंगे, तो the operator will be very happy and the operator will also be interested in giving money to you. So 400 का कॉल ऑप्शन के अंदर में हम बेच सकते हैं, और हम बाई कर रहे हैं 420 या 430 का कॉल ऑप्शन। कॉल क्यों बाई कर रहे हैं? क्योंकि हमको मंदी खेलना है, तो हम मंदी कॉल के थ्रू कर रहे हैं, क्रेडिट स्प्रेड के थ्रू। दैट रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट 5000 रुपीज, तो आई विल एग्जीक्यूट दिस ट्रेड। प्रॉफिट कब बुक करेंगे? जब हमारा प्रीमियम का वैल्यू ऐसा हो जाएगा जो मुझे 70% प्रॉफिट दे देगा, तो आई एम हैप्पी टू बुक 70% ऑफ 7000 विच इज 4900। अच्छा, इस केस के अंदर में 7000 आया था, जनरली 5000 रहता, बट इस केस के अंदर में हमको 7000 मिल गया था। या So you can profit book हो गया, तो can you roll the strike if you see book suppose bearish? Suppose we have seen bearish and our profit target is met, 70%. So can we again roll the strike and again that next expiry भी हो सकता है, expiry भी हो, एक कंपनी आ जाए वापस और नया strike खोले, ऐसा possible? So let it be a fresh trade. नहीं, continuous trade नहीं खेल सकते। करंट एक्सपायरी का रोल मत कीजिए। करंट एक्सपायरी अगर बुक हो गया, वो चला गया, ट्रेड खत्म। अब नेक्स्ट एक्सपायरी में हम नया चार्ट देख के नया व्यू करें। We can continue doing these things in that stock. Constantly हम करते रह सकते हैं, but it's a new trade because what we are seeing सर पैसा तो लिमिटेड है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक में ज़्यादा चांस है उस एक्सपायरी में पैसा बनाने की स्टॉक। और मतलब you will find better opportunity. वो डेली हम 200 स्टॉक जब देख रहे हैं ना सर, तो पता लग जाता है कि यार ये स्टॉक में अभी बहुत लंबे अवधि का ब्रेकडाउन हुआ है, तो चांसेस है कि, और ओवरऑल अगर उस सेक्टर में भी वीकनेस है और वो स्टॉक भी गिर रहा है, तो मैं उस स्टॉक की जगह इस स्टॉक में प्रेफर करूंगा कि मैं पोजीशन बिल्ड करूं। बिकॉज रोल ओवर इज अ ट्रैप, वेरी ऑनेस्टली। आई डोंट रिकमेंड एट अ रिटेल लेवल, नो, एट एन प्रॉप लेवल ऑब्वियसली वी डू रोल ओवर पोजीशन बिकॉज बड़ा पैसा बनता है, बट एट इंडिविजुअल लेवल आई डोंट रिकमेंड रोल ओवर्स, बिकॉज फिर आदमी लॉस में भी रोल ओवर का माइंडसेट में आ जाता है। अरे इस एक्सपायरी में लॉस हुआ, कोई बात नहीं, रोल ओवर कर लेता। अरे नहीं करना भाई, ये एक्सपायरी का लॉस इस एक्सपायरी के लिए था, नेक्स्ट एक्सपायरी को फ्रेश माइंड सबको सोचना। Because bearish, so we are selling call and we are buying out of the money. In case of bear call spread, we will sell 400 call and will buy 420 call, which is out of the money. The strike to buy for hedge will depend upon receiving close. So this you are buying, no? Acha, we will select 400 as a strike for short put. Yeah, it's a typo. It's a typo.
It should be short call. Thank you. इतना closely देख रहे हैं आप. Very impressive. Okay, so there are a lot of examples which I have given here. You can take your time. This presentation will be shared with you. Please go through it. Try with one lot. थोड़ा कोशिश करिए. 100% I am telling you that this can be your. कई लोग बोल रहे हैं ना कि सर मुझे पार्ट टाइम 1 घंटे 2 घंटे का मार्केट में काम करना है. This could be that strategy. Although stocks में एक रिस्क रहता है कि वो 10% ऊपर नीचे हो सकता है, तो you have to probably get into firefighting mode very fast. At least इंडेक्स में वो प्रॉब्लम नहीं है कि 5-10% मूव करना बहुत बड़ी बात है. But because stocks में प्रीमियम ज़्यादा है, तो your return on equity is relatively higher. So you should be okay to take higher risk in stock options. This model has given us an accuracy of 82%. So it's a very good model, very stable model. We have been running for many years now. In face-to-face Bangkok also we discussed this model. I'm sharing the same model today. So the process which you have to follow is look at the charts of all F&O stocks on daily basis. See which stock is showing relative strength on a daily and 2 hourly basis, and trade using options in stocks where obviously options are. अगर options illiquid है तब फिर आपको futures से trade करना पड़ेगा, which I don't recommend to people to do. Is this okay? अभी तक का? Is it okay? I want to also touch on one point which is slightly non-options oriented. Okay? बहुत सारे studies are market में. There are different ways of finding out stocks. Because ultimately when you are trading stocks, one of the core strengths should be किसमें करना है. तो इतने सारे stocks हैं, इतने नाम आते रहते हैं. So we get lost with so many stocks. Nifty Bank Nifty is easier कि पता है ये 2 ही इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करना और ट्रेड करना है. स्टॉक्स के अंदर में आइडेंटिफाई कैसे करें? तो लुकिंग एट द चार्ट्स will obviously give you identification. There are you can create scans to find out outlier stocks. Just 1 minute, let me complete this. I'll get back to you. You want stocks where outlier stocks, जैसे स्टॉक में जिसमें वॉल्यूम हो रहा है, जिसमें ब्रेकआउट हो रहा है प्राइस का. So there are scans which can be used to find out stocks. One of the things which we use very actively is the chart patterns. And I'll come back to you with your question after end of this. Yeah. Chart pattern I think is a very very effective tool because chart pattern से stock का एक अच्छा confirmation ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मिलता है. So we developed this in StockEdge. बहुत time लगा इसको develop करने में. We used lot of AI to do that. So chart pattern को अगर मैं इसको daily basis पे नहीं देखूंगा, मैं इसको weekly basis पे देखूंगा, because किसी भी stock में chart pattern बनता है तो वो लंबा अवधि के लिए वैलिड रहता है. It is not just for 1 day, 2 day or 10 days. So let me show you few stocks which I have added as part of chart pattern in TradingView. And this is my way of working. That StockEdge से मैं डेटा निकालता हूँ और फिर उसको मैं TradingView में अपलोड करता हूँ स्टॉक को और उसको रियल टाइम बेसिस पे TradingView में ट्रैक करता हूँ. चार्ट पैटर्न का ब्यूटी ये है कि अगर कोई स्टॉक में सॉलिड चार्ट पैटर्न है और वो स्टॉक relative strength may be valid है, तो I will build position in that stock. This is to try to answer that question that how to identify the stock. Because so many stocks के अंदर में इतने stocks में किस में पैसा डालना है, किस में ट्रेड करना difficult होता है वो आंसर. तो चार्ट पैटर्न could be seen as one. तो अगर इस स्टॉक को देखो अभी first source came into the chart pattern. I entered here. अभी इसको weekly चार्ट में देख के क्या लग रहा है? It is relatively strong, but right now, from a daily chart perspective, momentum थोड़ा डाउन हो गया, RS21 0 के नीचे चला गया, सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव है, तो ये स्टॉक अभी इज नॉट अ फेवरेबल. तो अगर मेरे पास ये स्टॉक होगा तो मैं निकल जाऊंगा एक बार इसमें से. हो सकता है इसने एक पॉइंट पे स्ट्रेंथ दिखाया था, बट वो स्ट्रेंथ उसने कंटिन्यू नहीं किया है. तो वाई टू ब्लॉक माई मनी इन दैट स्टॉक विच इज स्टिल नॉट शोइंग मी द फॉलो ऑन स्ट्रेंथ. Let's see some other stock. Triveni. Look at this stock. What do you think about this stock? And this is all output from chart patterns. Strong stock, good momentum. एक strength वाला stock का सबसे बड़ा advantage यही होता है कि ये गिरता जरूर है, because market गिरेगा तो ये भी गिरेगा, but इनमें recovery बहुत जल्दी आता है, right? So if you can build your position
when the new recovery is happening, with every breakout point, you can actually make a lot of big money in these kind of stocks. So would you hold on to this stock or would you buy this stock? The answer is yes, because ये stock अभी अपने यहाँ last breakout हुआ था. So where do I build more positions? With every breakout, I build position. तो लास्ट ब्रेकआउट के लेवल पे ये आ गया तो चांसेस है कि ये स्टॉक वापस से यहाँ से घूम जाएगा, बिकॉज टिपिकली प्रीवियस स्विंग हाई का मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं ब्रेक करता है टिपिकली. सो दिस इज अ गुड प्राइस फॉर टू बाय दिस स्टॉक, बिकॉज वीकली में भी स्ट्रेंथ है और डेली में भी अभी भी स्टॉक के अंदर में स्ट्रेंथ है. लेट्स सी सम अदर स्टॉक. लेट्स सी सम स्टॉक्स व्हिच हैव गॉन डाउन, से एनटीपीसी. व्हाट विल यू डू विद दिस स्टॉक? It broke the previous swing high. It is around those levels. It's a strong stock, good momentum. Daily chart के अंदर में भी strength है. Would you buy this stock? Would you buy? Hello? नहीं? क्यों? Not necessary. It may not come there. Maybe adding it a small quantity is not a bad idea. If it comes here, it's great. If it doesn't come here, you miss an opportunity. But yes, closest to super trend, or let's not call super trend because super trend का level मेरे लिए इतना important नहीं है. But closest to this previous swing low or previous swing high breakout point, that is a good level for me to buy, rather than super trend. Sir, I'm willing to not have profits instead of having losses. Yeah, that is a good thought process that you can do that. But yeah, I mean there are so many stocks, so you can actually think about rejecting stocks. Stock market में एक चीज मैंने देखा है कि rejection बहुत important. Selection करते करते तो 50 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में आ जाएंगे और सब में थोड़ा थोड़ा पैसा होगा. The more you reject, you'll finally land up in a stock which is very very good for you. चलिए, we'll take the last question and then we'll continue the discussion later also. So one question here. So we discuss about this option strategies for stocks. So normally. While exiting, do you actually face some liquidity challenges later on from the stock options? Yeah, so you can only take an exposure to certain extent in stock. So there is a liquidity issue. Okay. So you can't say that मैं पूरा 100 करोड़ stock option में trade करूँगा, नहीं हो सकता. Okay. तो yes, but अगर आप करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का काम कर रहे हो, that is fine. Okay, thank you. और थोड़ा समय देना पड़ता है exit में, क्योंकि अगर आप bid को बेचोगे और आस्क को लोगे तो देयर इज एन इम्पैक्ट कॉस्ट. तो थोड़ा आपको ट्रांजेक्शन, तो पीपल व्हाट वी काइंड ऑफ यूज इज एल्गो. तो हम लोग एल्गो में डाल देते हैं कि बेस्ट बायर बन के लेता रहे, बेस्ट सेलर बन के बेचता रहे. सो देन वी गेट सम एक्स्ट्रा मनी बिकॉज वी डोंट हैव टू पे दैट इम्पैक्ट कॉस्ट टू द मार्केट मेकर. Okay, we'll take last question because we'll go to the next session. And anyways, I'm here so we can discuss this offline as well. Please. Shall we do a live example of a stock? चलो. So वो stock लेते हैं जिसमें कोई chart pattern आया हुआ है और जिसमें कोई strength दिख रहा है logically. So let's go to triangle pattern. Okay, चलो इसको पहले filter करते हैं. Let's go to only F&O stocks. Okay. ओके, टाइटन, ठीक है, अंदर चलते हैं. अभी चार्ट देख के क्या लग रहा है आपको? टाइटन में तेजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. तेजी खाली इसमें मैं काम करता हूं, मेरा जो आरएस है उसको भी डाल के एक बार कंफर्म कर ले. बोलो, आप बोलो. आरएस प्रैक्टिशनर्स, टाइटन लेना है, ठीक है. अब चले उसमें ऑप्शन चेन देखें. तो नीचे का लेवल ये है तकरीबन, इसका लो क्या है 2300 का स्ट्राइक प्राइस. इसका पुट बेच सकते हैं हम लोग या यू आर गोइंग टू वॉलंटियर? क्या हम लोग बेच सकते हैं 2300 का स्ट्राइक पे? यू थिंक सो? चलो एक बार इसका ऑप्शन चेन देख लें. अच्छा, द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन चेन इन StockEdge इज दैट हम लोग क्यूमुलेटिव दिखा रहे हैं.
और भी कोई दिखा रहा होगा बट मैं मेरे को नहीं पता। अगर आप देखो इसके अंदर में मुझे क्या बेचना है, नीचे का पुट बेचना है, तो पुट के अंदर में सबसे ज्यादा ओआई कहाँ खड़ा है, 2400 में खड़ा है। इनफैक्ट 2300 का स्ट्राइक प्राइस है ही नहीं है। नहीं, स्ट्राइक प्राइस तो है, हाँ 2400 में खड़ा है और 2300 में खड़ा है। नाउ लेट अस सी द प्रीमियम वैल्यू। ये कल का प्रीमियम वैल्यू, एक्चुअली आज का देखना पड़ेगा। 29 मार्च का, 29 मार्च इज वेरी नियर, सो द प्रीमियम वैल्यू ऑफ पुट इज 2 रुपीज, राइट। लेट्स डू जैन, 29 मार्च इज टू क्लोज फॉर अस टू डू दिस ट्रेड। Almost 11.65. So let's go to option chain. Let's go to option tool. कौन सा करें, ऑप्स्ट्रा करें क्या? Is Prashant here? I heard Prashant is going to come. Not here. Title option. So it is saying it is not liquid. So we have to see the terminal whether it is liquid or not. हाँ, एक ही लॉट ट्रेड हुआ है क्या? तब फिर अप्रैल में नहीं कर पाएंगे, इट्स लिक्विड। Then we have to come closer. So the more we come closer, the we are adding the risk. Which one is more active? अप्रैल एक्टिव नहीं है ना, तो मार्च विल बी स्लाइटली क्लोजर, बट चलो देखते हैं इसका आरओई क्या आता है। अगर मार्च करना है तो मैं और क्लोजर स्ट्राइक प्राइस में आता था फिर। सो कैन बी, आइडियली दिस शुड बी द स्ट्राइक प्राइस, बट वी कैन ट्राई 24 बिकॉज स्ट्रेंथ तो है स्टॉक के अंदर में। सो लेट्स सी 24 के अंदर में क्या चल रहा है। 24 भी 2 रुपये है। ₹5.65 है। ओके, तो इसको ऐड करते हैं एंड लेट अस रिमूव द अप्रैल पीस। Okay, and I need to buy an option. So, which strike price we should buy so that our net premium inflow, obviously 5,000 रुपये तो प्रीमियम इनफ्लो नहीं होगा। So हमने 2400 बेचा है, तो हम this is ₹5.35 and this is ₹2.30. So what is the strike price? What is the lot size? तो 2300 का पुट का दाम है मार्च का ₹2। So let us add this as buy. तो इसका नेट क्रेडिट है 1350, 56,000 का प्रीमियम इन्वेस्टेड है, इसमें रिटर्न आ रहा है 2.39%। सो थोड़ा और हमको दूर जाना पड़ेगा बिकॉज, बट ठीक है 7 डेज के अंदर में 2.39% इज नॉट बैड कंसिडरिंग 7% इन अ मंथ। सो इसका पे ऑफ ऐसा है
what is your stop loss? Your stop loss ideally should be ये जो नीचे का low point है. Actually, this is not a best trade. Ideally, ये month के starting में trade मिलता है. Typically, stop loss is कि ये जो level है, इसके level के नीचे जाएगा तो you book your trade, right? And most of the time, your premium जितना आपने gain कर रहे थे, उसका 2 times is your loss. And out of say 100 trades, maybe 5 trades, 6 trades you will see you will incur loss. Baki most of the time your trades will be within the range of 70%, 60% of the premium value. So what we'll do is we'll sit separately, we'll find out more trades and we'll discuss that. यहाँ पर मैं बैठा हूँ, we'll figure out more trades together and we'll discuss this. But I hope this entire RS model, using it for cash position build-up, people are interested in cash. Some people were saying कि sir cash के अंदर में कैसे काम करें? This is a great model to build peaceful portfolio for yourself, momentum portfolio, and options you can use as a sweetener to your overall working. All right, thank you everyone for your time. I have taken some extra time, but I'm sure Manu will pardon me for that. Thank you.